Convolution. Now we have two topics left, that is convolution theorem and application. That convolution I'm doing now. Sometimes in exam they may ask you the statement. So what is the statement you can see? If Laplace of f of t is equal to f bar of x and Laplace of g of t, थोड़ा सा उल्टा लिखा है, कुछ मतलब Laplace inverse is Laplace inverse of f bar of x is equal to f of t and and Laplace inverse of g bar of x is equal to g of t. Then then if you multiply these two, which one? This one, Laplace inverse of f bar of x into g bar of, which can also be written as f of t star g of t, and its value is defined by this integral 0 to t f of u and g of t minus u t g of t minus u d. Proof is not required in your syllabus. You have to memorize the statement. Okay, what is that? आपके पास ऐसे दो फंक्शंस है जिसका लैप्लस इन्वर्स आपको मालूम है. Okay, if you have two functions whose Laplace inverse is already then using convolution theorem we can find out its the product also. Convolution is nothing but a special type of product. तो ना दो functions को जिसका Laplace inverse आपको मालूम, convolution theorem से उसकी Laplace inverse के product की वैल्यू भी अपन मालूम. Understood? Okay, Okay, sir. एक क्वेश्चन करके देखेंगे कैसा करते हैं इसके पास. Evaluate Laplace inverse of 1 by s into x square plus 4 s into x square plus 4 using convolution theorem. Convolution theorem. अगर क्वेश्चन में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के प्रोबेबल का मेंशन नहीं करा सको तो आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हो, आपका मर्जी, कौन सा भी मेथड अप्लाई कर लीजिए. चॉइस इज योर. Okay, sir. If it is mentioned to apply convolution, then you have to go for convolution. Look at here in this Laplace inverse, we have totally two functions are there. Let us assume that the first function is taken as f bar of x. That value is equal to 1 by x. Correct? Comma. Yes. Another one is g bar of x is equal to what? 1 by x square plus 4. ठीक है ना? अच्छा, ये कोई Yes. कंपलसरी नहीं है ये पहला लेना, तो आप दूसरा भी ले सकते, इसको पहला भी ले सकते. चॉइस इज टेकिंग लैप्लस इनवर्स ऑन बोथ साइड्स. लैप्लस इनवर्स ऑफ f bar of x which is equal to लैप्लस इनवर्स ऑफ 1 by x. So this is equal to Laplace inverse of f bar of x is there in our question. It is f of t is equal to, what is this value? Laplace inverse of 1 by s value is, formula याद है? Yes, sir. It is 1. Yes. Okay. Now f of t, if it is 1, then what is f of u?
It is also one only now. Yes, sir. T है तो T change होगा. Taking Laplace inverse here also. Laplace inverse of d bar of s is Laplace inverse of 1 by s square plus 4 can be written as 2 square. And this value we know that it is v of t according to the given statement, and we know that this value is what? 1 by 2 sin 2t. Now Yes, this is sir. the formula sin 2t. Okay. Then if you want g of t minus 1 by 2 as it is, sin also as it is, 2 also as it is, but t can be written as t minus t. This is g of t which is the required. So g of u आ गया, g of t आ गया. Now we can apply the convolution theorem here. And look at by convolution theorem by convolution theorem, Laplace inverse of a bar of s into e bar of x, which is equal to f of t star g of t, which we cannot write, no problem. Both values are same. F of t into f of u into g of t minus ut. Okay. So we have to integrate Yes, sir. this value f of u and g of t minus u value with respect to u between the limit 0 to t. This is equal to Yes. integral 0 to t. F of u is 1 now. Suppose if I am Yes, neglecting sir. also no problem. 1 into sine of g of t value. 1 by 2 is also already we have taken outside. Okay, here only I have sine of t minus 2 sine of 2 into t minus u. This is d. Now it will be very much perfect of integration part. 1 by 2 outside, 0 to t also outside. Sine of, if you multiply with 2, it's getting 2t minus 2u into d. Okay. Now what is the integration of sine is what? Minus cos 2t minus 2u. Because we are integrating with respect to u, the u coefficient is minus 2. We have to write here in the denominator. Here already 1 by 2 is already outside, and the limits are 0 to t. I hope you understand this step. Because we are integrating Yes, with sir. respect to u coefficient is minus 2. This minus sign cancelling. 2 will be taking out, it's 1 by 4. Then applying the upper limit is, in place of u, we put a t. The cost of 2t minus 2t. The upper limit होगा, the upper limit minus lower cost of 2t. In place of t, we have t only, u value 0. So this only, this close. This one cancel, and cos 0 value is 1. So answer is Hmm. 1 by 4 into cos 0 1 value, minus cos 2. cos 4t, sorry, cos 2t. This is the value of Laplace inverse of f bar of s means 1 by s into g bar of s means s square plus 4. Like that, we can apply the convolution theorem and we can get to the result. अब ये प्रॉब्लम में आपको आसानी क्या है, f of u value 1, that is very easy. If suppose f Yes, of sir. u value is also something little lengthy, then how to do it, we'll see in the next problem. Okay, Okay. Okay, sir. next page.
question is number 2, using using convolution theorem. ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे चल के फार्मूला, सर स्टार लगा देते क्या प्लीज? ये प्रॉब्लम आगे चल के फार्मूला बन using ओके convolution theorem. Prove that Laplace inverse of s by s square plus a square whole square, s square plus a square whole square. That answer we have to prove that 1 by 2 into t sin a. It is important. यस चलो, so here again we have to assume on as a two function form, like let us say one value will be taken as s bar of x is equals to, अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में तो दो टर्म, आप न्यूमरेटर में x लगाओ या फर्स्ट टर्म को x ले लो या सेकंड टर्म को x ले लो, चॉइस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म आंसर कॉमा v bar of x is equal to s by s square plus a square. Can we write like this? यस सर That s we can take for this function also, no problem. Choice inverse, taking Laplace inverse on both sides. Laplace inverse of s bar of x is equal to Laplace inverse of 1 by s square plus square. This is what from the given statement of t value. This is what according to the formula 1 by a sin. Formulas आपको देखो पूरे आना है, लैपलेस का भी आना है, लैपलेस इनवर्स का भी आना है, तभी आप ये कर सकते हो। एफ हाँ ऑफ सर टी लैप्लास इनवर्स को याद कर लेते। कुछ भी नहीं, रिवर्स करना, 1 by a sin, this time replacing a as it is t with u, because we ओके सर required this f of u value. ओके Similarly, taking Laplace inverse here also, v bar of x is equal Laplace inverse of s by s square plus a square. This is v of t by the given statement, and this value is cos at by the formulas of Laplace inverse. Now we require g of t minus u value. So wherever t is there, just write down t minus cos a, t can be written as t minus u. यस सर Now, then we have to apply convolution theorem by convolution theorem by convolution theorem. Laplace inverse of f bar of x into v bar of x.
is equal to integral 0 to t f of u into u of t minus, इतना गैप में पूरा भूल गया क्या? हम्म, फिर आपको अभी नहीं 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 बोले। केमिस्ट्री भी पढ़ना है, फिर भी पढ़ना है, अभी स्टार्ट भी नहीं करेंगे. f of u value is this one here we have, correct? यस Correct? सर। Take 1 by outside, this is 0 to t sin a, साइन ए यू माइनस not minus, into, 0 into इंटू cos of इंटू कॉस ऑफ ए इंटू टी माइनस यू। we multiply in t minus a ओके। into d. Now in the basic classes we learn one formula that if you write here, I am writing here, यहाँ पर लिख देते हैं with the help of another color, 2 sin a cos b form, 2 sin cos b. How to write? याद है फॉर्मूला? 2 sin a cos, नहीं यार सर। इंटरमीडिएट से रिलेटेड है. sin of a plus b minus, नहीं माइनस प्लस, यहाँ पे लिखिए sin of a plus b प्लस sin of a minus. अगर यही फॉर्मूला में मान लो cos पहले आ रहा, एग्जाम्पल 2 cos a sin b, देन यहाँ पर ये बीच में का साइन माइनस हो जाए, दैट इज द ओनली डिफरेंस, करेक्ट? यस सर। अब इसको यस। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करेंगे पहले. डिवाइडिंग विथ 2 इट विल बिकम 1 by 2a, 0 to t आ गई, 2 into sin au cos of at minus au du. Assuming here au value as a and this is at minus au complete value as b, we can apply this one, sin of a plus b 1 by 2. Okay? We have not integrated till now, integrate first, okay? 0 to t. Now applying the formula sin of, can you tell me that sin of a plus b, a plus b साइन ऑफ ए प्लस बी a कॉस au plus ए यू प्लस at ए टी माइनस ए माइनस टू। ए, ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी यस प्लस प्लस साइन ऑफ ए साइन माइनस बी ए माइनस बी, ए वैल्यू ए इज ए, यू ये पूरों को माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस ए ए टी टी प्लस ए प्लस यू। ए एंड देन डी, बिकॉज इंटीग्रेशन इज देयर आगे, दिस प्लस ए यू माइनस ए यू कैंसिल, दिस इज 1 by 2a integral 0 to t, what's left here, sin a 2, okay ना, plus यस here what's left, sin साइन टू ए a, यू माइनस ए टी yes, 2au minus at ए टी। and then du आगे. Okay, now be careful. यस। This both of the functions we are integrating with respect to u. ये बात अच्छी तरह से याद रखो. I'm going to the next page. Look at Laplace inverse of f bar of x into g bar of x we are finding. I will replace these values later on. This is equal to 1 by 2 is there outside. Let it be outside only. That step I am writing again 0 to t sin at plus sin of 2au minus at. यही था ना पिछला वाला स्टेप, देखिए यस सर। ऊपर देखिए, यही है 2au minus
Now look at this one. What I am doing here is I want to apply this 0 to t value for both of these two. This one with respect to u, similarly this one also with respect to u along with their limits. 0 to t sin at du plus 0 to t sin 2 au minus at into d. Now this is 1 by 2 into here you see sin 80 is a constant term because we are integrating with respect to u. So they will take outside. Sin 80 is outside. Integral 0 to t 1d, nothing left out there, प्लस यहाँ पर वेरिएबल है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बोले माइनस कॉस राइट Yes, sir. माइनस कॉस 2 au minus at because we are integrating with respect to u coefficient is 2 and their limits are 0 to t 0 to t. and because 1 by 2 is outside one more bracket we have to close 1 by 2 into sin 80 is a constant here because with respect to u 1 du is 2 limits are 0 to t. So minus 1 by 2 Yes, one sir. more time outside. Upper limit minus lower limit. That is cos. In place of u, we have to put t. Cos 280 minus 80. The upper limit. Yes. This is ul minus. Lower limit is cos. If Cos you put 80 0 minus 80. minus 8. Right? This is Yes, sir. 1 by 2 into upper limit minus lower limit. Upper limit is t. So it is t sin 80. लोअर लिमिट में तो जीरो चाहिए माइनस यहाँ पर देखिए जरा सा लॉजिक 1/2 इंटू कितना होगा कॉस 80 माइनस कॉस 280 माइनस कॉस 80 ना Cos 80. Yes, sir. ये माइनस आ गई कॉस ऑफ माइनस थीटा Minus एक काम करना ये cos जीरो को नहीं theta. लिखना ये जीरो को नहीं लिखना लिखे तो कंफ्यूज हो जाता Yes. है ये माइनस आ गई कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा ये भी कॉस Yes. 80 होता Yes. इफ यू वांट द रीजन इज दिस वन कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा ओनली Yes, sir. these two are cancelled if you see and 1/2 multiplied Yes. becomes 0 only. Finally the answer is Yes. 1/2 1 by 2 t t sin sin 80. it is the answer of Laplace inverse of s bar of s value is 1 by s square plus a square and then this is s both together becomes s by s square plus a square whole square. We have to prove that this is t sin 80 by 2a. यही आपको प्रूव करना है अभी हो गया ना प्रूफ Yes, sir. so we we can do one more question here on this topic then we can stop discussing the convolution theorem ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा लेट अस डू Okay, sir. question number 3 it is involve with using convolution theorem
And the question is Laplace inverse of 1 by x square plus 1। ये बेसिक क्वेश्चन है जिसकी हेल्प से अपन बहुत सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन को कर सकते हैं। ये 1 और 9 को देखिए, 1 और 9 की जगह नंबर 4 परफेक्ट स्क्वायर में आ सकता है। 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज Yes, अ sir. परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर 4 और 25 भी हो सकता है। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज मतलब क्या करना, 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर, 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, 4 कैन बी रिटन एज Yes. 6 स्क्वायर, 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर। इस तरह के फॉर्म के क्वेश्चन रहते हैं। ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। Okay. ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, देखिए। लेट अस assume that f bar of x is equal to, you got the idea, can you tell me that 1 by square plus 1, taking Laplace inverse on this, right? Yes, sir. Laplace inverse of f bar of x is equal to Laplace inverse of 1 by x square plus 1 square. And according to the statement is f of t value. And according to the formula, it is what? Actually, 1 by 1 you will get, but I am not writing that. Sin a t, a value is 1, sin t. Next, let us assume that t bar of x is equal to 1 by, अच्छा परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहा तो ये काम नहीं करेगा, जो लॉजिक अपन लैप्लस इनवर्स ऑफ t bar of x इज इक्वल टू लैप्लस इनवर्स पर यहाँ पर मैं 3 स्क्वायर लिखना भूल 3 square. Yes, sir. Laplace inverse of 1 by x square plus 3 square. this is g of t by statement, and this is what 1 by 3 sin 3t। okay, Yes, sir. यहाँ पर 1 by 1 आता था मगर नहीं लिखा था, f of true value sin 2 here, that should be understood but still I am writing, and g of t minus 2 value is 1 by 3 sin of 3 times of t minus, is it okay? Yes, sir. Oh, now we apply the convolution theorem by convolution theorem। उसके बाद आप एक और सेशन एप्लीकेशन पे बता दिए थे, ये लाप्लास का। Okay. No, by convolution theorem, Laplace inverse of f bar of x into g bar of x is equal to, this is integral 0 to t f of u and the g of t minus u into d. Now replacing those values, f of u is what? Tell me, ये 1 by 3 को आउटसाइड This लिख f of u is sin u 0 to t, this is sin u। minus हाँ, 1 by we don't have 3. any minus, sin Oh, comes yes, we don't into have minus minus. Sin 3t sin 3t minus minus 3 3u into du. into d, right? ये 1 by 3 मैं पहले ही बाहर निकाल, इसमें भी वही Yes, काम करना है आपको, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, 3 2 प्लस 6, 0 to t 2 sin 2 sin 2 into sin of 3t minus 3।
दिस इज बी। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला, टू साइन ए साइन बी का, टू साइन ए साइन बी, ए वैल्यू इज दिस वन, बी वैल्यू, टू साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस माइनस कॉस ऑफ ए, ओके। तो Yes, दिस sir. 1/6, let us apply the formula 0 to t, recording में वर्क हमने किया cos of a minus, this is a into minus of these two U values, minus 3t, 3t plus 3u. ये हो गया a minus t minus cos of a plus b, 2 plus U plus 3t, 3t minus 3u. this is also d, this is 1/6 is equal 0 to t, बोले 4u Yep. minus 3t ना, Yes, sir. 4u So 4u minus 3t minus 3t minus cos, minus cos 3t minus 2u. very minus 2, now finally we have to integrate, cos का इंटीग्रेशन साइन होता मालूम है आपको, Yes, sir. so this is sine of function value 4u minus 3t, because we are integrating with respect to u coefficient is 4, Yes, minus cos of, not cos, it's sine of, integrate yes. sine of, Sine of 3t minus 2u by 2 not 2, it's minus 2, minus 2. Yes, sir. coefficient is The minus limits are 0 to 2. Yes, sir. 0 to t. Yes, 0 to t. Now applying the limit, जरा एक केयरफुल करना है लिमिट अप्लाई, ये 1/6 आउटसाइड, जहाँ जहाँ भी u है वहाँ पर t रखना, Yes, ठीक है ना, sir. तो आंसर बोलना है Yes. साइन ऑफ, ये हो गया 4t minus 4t 3t माइनस to 3, sin t. तो t/4 ना, Yes, sir. ये हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, प्लस यहाँ पर भी कितना 3t माइनस 2t मतलब साइन Sin t/2, t by, yes, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ भी u है वहाँ पर 0, yes, तो sir. क्या हो जाता, साइन ऑफ बोले Minus 3t by 4 -3t/4, और plus ये sin of, माइनस प्लस, जहाँ भी t है वहाँ पर 0 रखना है, so क्योंकि minus t, it is minus t. u की प्लेस पे 0 Sin of, 3t होता ना, u की yes, प्लेस sir, पे रख रहे हैं ना, 3t. साइन Yes, sir. 3t/2 हो गई, ये हो गई आपकी लोअर लिमिट ब्रैकेट, लोअर, Yes, sir. आप जरा देखिए ना, 1/4, दिस इज साइन t/4 प्लस साइन t/2, इस साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, दैट इज वाई माइनस इंटू माइनस प्लस साइन 3t/4, ओके, Yes, और sir. ये माइनस इधर अंदर मल्टीप्लाई होके साइन 3t/2, थोड़े स्टूडेंट जल्दी जल्दी में ये दोनों कैंसिल कर देते हैं, इट इज नॉट कैंसिल इज देयर, ठीक है। Okay, अब क्या sir. करेंगे, Okay. इन दोनों में से साइन टी कॉमन आ सकता है ना, फर्स्ट और सेकंड टर्म में से, Yes, sir. इफ यू टेक साइन टी कॉमन, 1/4 प्लस 1/4 इज 1/2 ना, Yes, sir. तो फिर मैं बाई टू भी लिख देता हूँ यहाँ पर, सॉरी Okay. 1/4 और 2 है, देखिए राइटिंग मिस्टेक है,
4 नहीं है, ये 2 है। टू है ना वो। Yes, sir. 1/4 plus 1/2 is 3/4. sin t you have taken common, प्लस यहाँ पर से ले रहे हैं sin 3t कॉमन, ये हो गया 1/4 माइनस 1/2, इट्स -1/2। Yes, sir. तो आप थोड़ा सा अलग से कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए। दिस इज 1/6, ये हो गया, कितना हो गया, 3 sin t/4 माइनस sin 3t/4। नाउ फाइनली इफ यू टेक 4 आउटसाइड, 6 4 का 24, 24 3 sin t माइनस sin 3t, minus sin 3t, 3t. ये किसकी वैल्यू, फाइनली अपना जो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 F एस स्क्वायर प्लस 1 s square plus 1 एस स्क्वायर प्लस into s square plus 9. की वैल्यू आ गई 1/24 इंटू 3 sin t माइनस sin 3। इस तरह से ये क्वेश्चन कॉन्वोल्यूशन के ऊपर जो करे थे अपन, 3 क्वेश्चन फिर हमें एज ए सैम्पल, अब इसको देख के दूसरे क्वेश्चन पे करना है तो ठीक है। तो विल हैव वन Yes. मोर सेशन आई थिंक टुमारो, इफ पॉसिबल आई टेक, जैसा भी पॉसिबल है आज या कल में खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, Okay, sir. तो Okay, लेट्स inshallah. एंड अप दिस मीटिंग, हैव अ नाइस Okay. Okay. Thank you, sir. Allah.